Yes, so one question from Dalia and Samir Anil. How to manage the losses of die setup during sequence of operations running, say bend and pipe piercing? How to Dr. Nair, you manage? need to take this question. Can I see the question? Can you repeat it? Omkar, Okay. I think you can answer now. Yes. Yeah. Can you repeat the question? Yeah. How to manage manage the losses of die setup during sequence of operation running, say blank, bend and piercing? No, why are you saying, Dali and Samir, can you come on the line? Can you, why are you saying it requires why are you saying Yes. that it requires a die changeover? Is See, the die changed? Is the die required to be changed? Please tell me that. no, my operation A to B and then it is coming to C. Whatever Yeah. is the A output, Yeah. what is the A output? It is coming to machine B for the operation. Yeah. And then machine B output is coming as an input for machine C. All right. Yes. Okay. So in that case, say the third C operation machine setup has to be parallel, or it should be at the takt time of the third operation. See, I mean, at 220, I have set up my machine A. 225, it is on machine B, and 228, it is coming on C. right. So 8 minute loss will be there by design, or we can manage it. No, first of all, the operations you have sequenced in 3 machines, right? So it is moving from machine A to machine B to machine C. So there is a movement. There is a movement of a trolley, or there is a movement of part from machine A to machine B to machine C. So that this requires a different kind of approach for analysis. You have to look into the line balancing. That means you have to make sure that whether or not the output, the productivity rate of machine A, machine B, and machine C, are they really getting balanced or not? But the question of setup is not coming here, because setup loss in this case will be the line setup. The line is comprising of machine A plus machine B plus machine C. So whenever you want to actually move over to another part, all the 3 machines setup is required to be changed, right? Yeah. Yeah. So your total setup changeover study will comprise of all the machines which are in one line. Okay. So in the question that you are asking, if it is related to the time loss for shifting of part from machine A to machine B to machine C. That is not. Yeah. So otherwise, you have to consider it as a line setup time loss. So the definition will be in your case. आपके केस में definition क्या होगा? ये line में last good product कितने बजे बना था, और line changeover के बाद the first good piece कितने बजे बनना शुरू होगा. First good piece means at the end of the line. So that will be your total changeover time of the line, and that you should be really aiming at to reduce it. अभी मानिए आपका out of your machine number, machine A, machine B, and machine C, the most complex one is, say, bending machine, the machine which is doing the bending operation. So in that case, you should be really starting with the bending machine related attention. You should be focusing your attention. आपका attention रहेगा ज़्यादातर आपका bending operation. And then you will find that if the bending operation is actually the bottleneck, और उसको आप debottleneck कर रहे हो, आपका total line change over time के ऊपर जो असर है वो automatically कम हो रहा है. So do one thing, do the analysis simultaneously, run the camera for the line as a whole, and also keep one camera for each changeover time. Then you will be able to conduct the study. Okay. प्रेस शॉप में हमेशा आप जब डाई चेंज करते हो, डाई चेंज करने के बाद आप जब सब सेट है, उसके बाद आप ब्लैंक देके आप प्रोडक्शन शुरू करते हो.
तो नॉर्मली पहला 2-3 जब आप निकालते हो वो अच्छा नहीं निकलता है, और उसके दौरान आप एडजस्टमेंट को फिर ठीक से सेंटर लाइन जो है उसको एडजस्ट करने का कोशिश करते हो आप, फिर डिफरेंट जो पैरामीटर्स है उसको एडजस्ट करने का कोशिश करते हो, सो दैट you before you actually go for continuous production you make these adjustments. तो हम लोग काफी टाइम वेस्ट करते हैं ये सारे ट्रायल्स एंड एडजस्टमेंट में, उसमें पार्ट भी खराब निकलता है और टाइम भी जाता है, ये सेटअप टाइम के अंदर आता है, इसको कैसे हम एलिमिनेट करें? ओंकार, यू वांट टू ऐड समथिंग? यू कैन. या आई मीन इसको जब हमको ओवरकम करना है तो स्टैंडर्डाइजेशन जो हमने बात की, दैट इज द थिंग विच बेसिकली हेल्प्स यू टू ओवरकम दिस एडजस्टमेंट लॉसेस कंटिन्यूसली. सो ये आता है जब आपका इंटरनल एक्सटर्नल हुआ है, सीरीज पैरेलल हुआ है. जब ये एडजस्टमेंट की बात आती है तो मोर और लेस स्टैंडर्डाइजेशन इज व्हाट बेसिकली वर्क्स आउट ओवर देयर. एक्चुअली यू नो हम लोग अभी अभी कैपेक्स के बारे में बात किया, काफी टाइम मैंने देखा, मतलब हमारा क्लस्टर कंपनी में भी देखा कि लोग कैपेक्स से मशीन और एक मशीन खरीदने का बात करते हैं, जबकि एनालिसिस ही नहीं किया कि सेटअप टाइम से इंप्रूवमेंट कितना होगा और उनमें से उनका जो प्रोडक्शन का डेफिसिट है पूरा आ जाएगा. लेकिन वो सेटअप टाइम को रिड्यूस करने में ज्यादा टाइम नहीं देते हैं एनालिसिस में, लेकिन वो सोचते हैं कि एक नया मशीन लगाओ और एक ऑपरेटर लगाओ तो मेरा प्रोडक्शन निकल के आ जाएगा. आई थिंक दैट इज नॉट दैट गुड अप्रोच, एब्सोल्युटली नॉट. ठीक है, और कोई सवाल है? Sir, I personally feel, sir, unless and until your OE is 85%, you should not go for a similar machine purchase. Yeah, but depends on the bottleneck machine actually. The bottleneck machine performance. क्योंकि आप देखोगे ज्यादा से ज्यादा मशीन, plant time of production itself is not good enough, except bottleneck machine. Bottleneck machines are quite highly utilized. Yeah. Any other question? Sir, this is Anil again from Dali and Samir. बोलिए अनिल, please बोलिए. I wanted to just understand how we can utilize the lunch breaks into the changeover period. Can you repeat, please? Again, repeat. Lunch break into changeover. All right. If any changeover is coming in between the lunch break or tea break, right, and how to utilize that yes, in a very much standard manner. Very much possible. Yes, costly, expensive machines are there. तो उसको utilization जितना अच्छा रहेगा, particularly plant utilization उतना ही better रहेगा. तो इस केस में instead of considering them to be standard losses, आप क्या कर सकते हो? First point, always try to develop आपका मतलब redundancy create कीजिए skilled operator में. First point, अगर you are having operator who can manage the setup at the time when the lunch break is going on, then that operator may be from among the production operator itself. Then you can do the scattered timing for lunch. You can do a scattered timing a staggered time for lunch, a staggered time for tea. So in that case, at the time when that expensive bottleneck machine changeover is being done by one operator, मानिए कि 10 से 10:30 बजे दूसरे वो मशीन का ऑपरेटर टी चाय के लिए गया, लेकिन ये ऑपरेटर का चाय के टाइम आप दिया है 10:30 से 11 बजे, तो दिस पर्टिकुलर चेंज ओवर कैन बी डन एट दैट पर्टिकुलर टाइम by an operator. So the key thing here is developing an operator who can manage to do the changeover in a standardized manner. तो पहले तो स्टैंडर्डाइज कीजिए चेंजओवर को, फिर उसको डिस्किल कीजिए. डिस्किल अगर ना भी करो तो एक ऑपरेटर को आप ट्रेन कीजिए, सर्टिफाई कीजिए कि yes he can do, because your machines are all very expensive machines. You cannot just authorize anybody to do the changeover. That could be quite fatal. Don't do that. So
only after proper certification you should be able to authorize another person to carry on that job at the time of tea or lunch. But it is a good idea. You should do that. Right. Thank you. Thank Dr. you. Roy, but at lunchtime will be considered as available time. Sorry? Yeah, obviously. Yes, Obviously. yes, because in this case, management is taking a conscious decision because this is a expensive machine. And at the same time, we have to recognize the operator also needs rest. That is why Yes. staggered time is very, very important. Staggered time. Many companies have gone for staggered time for lunch. Right. Okay. Any other question? कोई और सवाल है? सर फ्लूइड कंट्रोल. हाँ. Yes, yes. तर आमची कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आहे, तर आम्हाला दिवसातनं खूप वेळा सेटअप चेंज करावा लागतो आणि 10 क्वांटिटी 20 क्वांटिटी असे कनेक्टर वगैरे फिटिंग्स आम्ही बनवतो. तर खूप वेळा आमचा सेटअप टाइम मध्ये जास्त वेळ जातो. त्यासाठी काय करू शकतो का? म्हणजे आता ते प्रोसेस आहे आणि कस्टमरची रिक्वायरमेंट तर त्यावरती आहेच. त्यासाठी हेच करायचंय जे आता आपण शिकलो ना, तेच बेसिकली करायचंय. सी ऐका, मी तुम्हाला एक रिक्वेस्ट करतो की आय कॅन अंडरस्टँड की 10 प्रोडक्ट्स आहेत किंवा 20 प्रोडक्ट आहेत, बट द थिंग इज की पहिले त्याचा स्टडी करा. ओके, की व्हॉट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सेटअप आणि व्हॉट शुड बी द आयडियल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सेटअप. त्याच्यावरून तुम्ही एका कंक्लुजनला याल की याच्यापेक्षा खाली येता येत नाही. देन यू कॅन डिस्कस दॅट विथ युअर मॅनेजमेंट की आपली जी काय क्वांटिटी आहे जे आपण प्रोड्यूस करतोय त्याच्यासाठी जर आपल्याला व्हॅल्युएबल गोष्ट करायची आहे किंवा अजून व्हॅल्यू ऍड करायची तर आपल्याला काहीतरी ऑटोमेशन करावं लागेल, कारण आपली क्वांटिटी खूप कमी. ओके, बट फर्स्ट अराइव्ह ॲट अ लेवल व्हेर इन विच यू कॅन बी व्हेरी शुअर की याच्यापेक्षा खाली आपण विदाउट ऑटोमेशन जाऊ नाही शकत. ओके राईट. सो दॅट विल गिव्ह अ फीडबॅक रादर दॅन डायरेक्टली गोइंग टू द ऑटोमेशन. तुम्हाला जर तुम्ही ह्याच्या आधी एफर्ट्स घेतले नसतील ह्याच्यावर, तर एफर्ट्स घ्या. 30 to 40% डोळे झाकून यू विल गेट द रिझल्ट आउट. ओके सर.